बीदर जिला औराद तालुका संतपुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में विलेज आता है बॉर्डर एरिया में। वो विलेज में हमारा औराद सीपीए को एक इंफॉर्मेशन मिला। A group of individuals have stored narcotics drugs, Ganja, in a farmhouse near the border. And after registering the case, CPI Kamal Nagar Circle, Ravinath, has conducted a raid, and from that farmhouse he has seized Ganja of 672 kgs, and which is worth around 35 lakhs. He has also seized one car and 3 motorbikes. He has also arrested 2 persons, and 2 more persons are absconding. A case is registered in Santapur police station and investigation process is on. And this case reveals the scale of narcotic transportation that is occurring in the bordering areas. And primarily this village, the Jamgi village, which is located just 200 meters from the border, Telangana-Karnataka border, is working as a transit point for the narcotics smugglers. ये गांजा उड़ीसा और विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया और भद्राद्रीगूडम भद्राचलम एरिया से इधर लाके इधर स्टॉक करते हैं। इधर से मुंबई, पुणे और बेंगलुरु को छोटा छोटा कंसाइनमेंट्स में सेल करते हैं। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चालती में है और 2 मेन किंग पिन्स को अरेस्ट करना पड़ता है।